हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 237। इस लेक्चर में हम सपोज करिए बीम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसी सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। सपोज करिए किसी सेक्शन पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होगा, क्या कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए डिफरेंट y1 y2 y3 y4 y5 y6 ये इसके ऑर्डिनेट हैं और ये हमारा लोडिंग का पैटर्न W1 W2 W3 W4 W5 W6 है। तो सिंपली mx क्या होगा, मोमेंट टोटल क्या होगा, इनको इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मोमेंट निकलेगा। अगर सपोज करिए कि इनको अगर हम शिफ्ट करें, इफ यू इंक्रीज बाय दिस b by l शिफ्टिंग करते हैं तो हमारा क्या होगा कि dmx क्या होगा, dmx equals to your this value will be your this you can say dmx. How we can find out this mx value is like this. So if we slightly change in this direction, so the change will be b by l into dx, dl by dx. For this is additive, and for this will be subtractive. So this y1 y2 y3 will be added with slight increment, and y4 y5 y6 will be deducted by a by l into dx. If this is added, so this portion will be deducted, will be minus a by l corresponding to this slope. So this will be your mx plus dmx is equal to y1 plus b by l, w2 y2 plus b by a, w3, and the rest will be y4 a minus l this. And if you deduct this mx dx minus, this is equation 2, from 2 to 1 we'll get dmx equals to your w1 plus w2 plus w3 b by l into dx minus w4 5 6 into a by l. This will be into dx. So dm by dx will be your w1 plus w2 plus w3 b by l minus w4 5 6 into a by l. Then this will be equal to 0 for maximum value. So your w1 plus w2 plus w3 divided by a equals to w4 5 6 divided by b. So for this condition, the average load on this side load divided by total load divided by a distance, and right hand side total load in this direction divided by b may be equal, will be close equal. So in these conditions we will get the maximum bending moment. So this is what article says. So we will try to follow this to get the maximum bending moment. Thank you for being with me. Thank you very much.